Assalamu alaikum for another session and chit chat regarding HR Diaries. So, Kuram Saab, what are we going to talk about today? I think I'd like to talk about procrastination today. What is that? Procrastination is delaying activities. You know, I have to do this, like, and then again, you are delaying it. So that's procrastination, and I think it's a very meaningful topic nowadays. Why? Look at it. We're working from home. Circumstances have changed. See, when you're in the office or at school or in universities, there's a certain curricula that surrounds you, a certain schedule, a certain set of rules. But when you're studying at home or working from home, things are different. Now you're in an environment where you used to enjoy yourself and you had very limited time for studies or work, but mostly you would be free to do whatever. But now it's different. So a lot of people are now procrastinating things. मैंने ये project due है, I have to submit it by this weekend, but नहीं, मैं उसको कर रहा हूँ last minute तक and so on. So that's why I think procrastination is something that's really important nowadays, more than ever. So, what were you guys like referring to people about? कि कैसे उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को चैनलाइज करना है घर के अंदर और ऑफिस के लिए. So, what do you suggest? How would people overcome? All right. See, different environments call for different solutions. कुछ similarities होती हैं, but generally they're different. Like for example, if it is a professional, normally by the time we get things coming to our table, they've already been procrastinated to that Who extent. are we? Who are we? The human resources function or human resources professionals at various companies. Usually when something comes to us, it's already been procrastinated and delayed to the point where, yes, honestly, sometimes show cause notices are required. And that's when we would get something. And this could be anything. It could be a simple matter of an interview feedback that's been delayed for over a month. It could be something else, which is very simple. But, if you delay things, they become serious. So similarly, if you're studying, and this I talk for all students, you have an exam, you have a test due, and then you wait to the last minute to do it, and then you're cramming and getting things together. So in सारों के लिए, there are certain common things that we can do in order to avoid it. What I understand, semester system में हम ज़्यादा delay नहीं कर सकते होते थे और annual system में हम कर लेते थे, हमें leverage था. Is that what? देखें, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो डिले करते हैं वो करते हैं, वो चाहे एनुअल में हो चाहे सेमेस्टर में हो. तो ये एक आदत है. देखें, अगर हम अब ये आदत अपनाएं कि यार ये काम करना है, 10 दिन बाद ड्यू है, लेकिन अगर मैं आज शुरू करूं तो मैं डेली थोड़ा थोड़ा करके 10 दिन में कर लूँगा. इंस्टेड इफ़ आई टेल माई सेल्फ कि यार अभी 10 दिन पड़े हैं, तो ये तो दो दिन का काम है, तो what will happen is कि शायद वो ना हो सके एंड पे. But one day you were telling me about a person who says, मैं घर पूछ लूँ कि ये assignment लूँ, मैं फिर काम करूँगा. What sort of delay is that? I think that would be called a mediated spousal delay. Okay, that is relatively a new term. It means when a person inverted commas. see, this spousal delay would be a factor where one person who's working would call up their spouse for everything, such as मैं बच्चों को assignment दूं कि ना दूं, मैं ऑफिस के अंदर extra hours लगाऊं कि ना लगाऊं, मुझे assistant professor से associate या vice versa promotion मिलने लगी है तो ले लूं. तो these are people, male or female, जो कि अपने significant other को कॉल करके पूछेंगे. एक होता है मशवरा करना, no harm in that, आपको that's something different. लेकिन ये जो डिले है ना कि जी अगली तरफ से जवाब नहीं आया तो आपका कॉर्पोरेट लाइफ रुइन हो रही है, बट यू नॉट गेटिंग इट, ये ज़रा स्ट्रेंज बात थी. तो आई वुड डेफर इट टू एग्जैक्टली दिस न्यू टर्म. Does it really work in our system जहाँ पे बंदियाँ जो हैं they are homemaker mostly? मैं stereotype नहीं कर रही, but mostly they are homemakers and they are supposed to raise families while husbands are working, like for earning and all. So does it still work this way? देखें, वर्क तो वो चीज़ करती है जो दो लोगों के बीच में करती है. आई मीन इट्स वेरी सिंपल एंड ऑब्नॉक्शियस व्हाट आई जस्ट सेड, लेकिन रियलिटी ये है कि वट एवर वर्क्स फॉर टू पीपल वर्क्स फॉर देम. नॉर्मली yes, there are cases where one person is a housemaker या फिर दोनों लोग जॉब कर रहे हैं and somehow they're managing home, different चीज़ें होती हैं.
बट ये जो मतलब आई वेरी रेयरली सीन दिस काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे आइदर द मिसेज इज वर्किंग इन एन ऑफिस और हर इची बिची के लिए ऑफिस की शी हैज़ टू कॉल द हस्बैंड टू सीक परमिशन. बट पैट्रियार्की में तो परमिशन लेनी पड़ती है ना. That's a very tough question. Personally, I really hoped कि हमारी सोसाइटी एनलाइटन करेगी एंड वुड लर्न कि देखें एक प्रोफेशनल होता है. जेंडर हैज़ नथिंग टू डू विद दैट. एक प्रोफेशनल है ये वो तो अपनी सर जॉब आप करे. कह रहे हैं यू आर अ मेल एंड यू डोंट हैव टू रेज किड्स एट होम एंड ऑल दैट. बंदियां तो फिर दोनों काम कर रही होती हैं ना. ये बात बिल्कुल सही है. देखें हैट्स ऑफ टू दोज वुमेन जो कि ये दोनों काम चलाती हैं. नो डाउट ऑल अबाउट वुमेन इट. एक्चुअली. मेरा ख्याल है आप इधर आ जाए. इसकी वजह यह है कि यू आर अ फीमेल एंड यू रिप्रेजेंट दैट क्लास, सो यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दैट वर्क्स. देखिए बाकी सही बात है. मेरा एक बायस है. आई एम अ गाय एंड देर आर सर्टन बायसेस. मैं बिल्कुल अपनी तरफ से कॉन्शियस एफर्ट करता हूँ कि मेरे वो बायस ना आए, बट बीइंग पार्ट ऑफ दिस पैट्रियार्की वो Okay, आ जाते हैं. what about people who delay works and projects and assignments when they are at office? For example, they say हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं और ये कोई इस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कोई प्लीज़ करे कि हम लोग अल्लाह माफ़ी दे के कह रहे हैं कि नमाज़ पढ़ने ना जाएं, लेकिन एक 4 फ़र्ज़ की नमाज है और जो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में अदा हो सकते हैं और वो 1.5 आवर 2 आवर्स बाद वापस आते हैं. एंड व्हेन यू हाउ डू यू डील दैट? देखिए मैं अपनी बात नहीं करता. एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअल वाकया है. इधर ही राइवेंट रोड के ऊपर एक फैक्ट्री थी. दिस इज़ फ्रॉम अ कपल ईयर्स बैक. तो देयर वाज अ कोरियन ओनर ऑफ दैट फैक्ट्री और काफ़ी मैसिव फैक्ट्री थी. 4-5 हज़ार एम्प्लॉयज़ की अभी भी है. अच्छा द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि वो जो ओनर है ही वॉज हैंडीकैप्ड. तो वो व्हील चेयर एक्सेस वो उस पर आता था. तो ही वुड कम इन आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स फ्रॉम कोरिया एंड विजिट हिज साइट. यहाँ पे उसके मुलाजिम थे एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड. उसने आके नोट ये किया कि यार जुमे को 11 बजे एवरीबडी इज़ ऑफ कि जी वो हमने जुमे की नमाज़ पढ़नी है. और 11 बजे से लेके 4 बजे तक दे वुड बी प्रेइंग जुमा. तो वो सुबह 9 बजे शुरू किया और 5 बजे साइन आउट किया. तो वो मतलब इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू डाइजेस्ट. लेकिन एट द सेम टाइम ही वाज वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ द रिलीजियस बिलीफ. तो उसने क्या किया, उसने सारी असेंबली बुलाई, सबको खड़ा किया और उसने कहा कि जी आई एम एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाई योर रिलीजियस फेवर एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट अब ऐसा है कि फ्राइडे आपकी छुट्टी है. फ्राइडे को आप अपनी मर्ज़ी से अपना जितना आपने प्रेयर करनी है आप करना है, प्लीज़ आप करें, दिल लगा के करें. सैटरडे विल बी वर्किंग डे हैंस फोर्थ. उसके बाद जी जो शिकायतें हैं लोगों से, नहीं नहीं आपकी मेहरबानी हम 15 मिनट में जुमा पढ़ के आ जाएंगे, हम आधे घंटे में आ जाएंगे. उन्होंने कहा नहीं जी आप आई रिस्पेक्ट द फैक्ट कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपना मज़हब फॉलो करते हैं और एंड अभी तक है उनका ऐसे. मैं इसी एनेक्डोट तो नहीं बल्कि एक्चुअल वाक़े को यूज़ करूँगा जस्ट टू से कि देखें जब भी कोई कंपनी ये कहती है कि देखें आप नमाज 10 मिनट लगते हैं तो आप पढ़ लें, बिल्कुल सही बात है, बट आप पौना घंटा ना लगाएं. तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एंटी मुस्लिम है या एंटी इस्लाम है. क्या बात ये कि देखें इस्लाम ये कहता है कि आप काम करने जा रहे हैं हक हलाल की रोटी कमाएं. हक हलाल का मतलब ये है कि देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ साइंड और वो कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि आपने 9 घंटे देने हैं जिसमें 1 घंटा पेड है. एंड व्हाट अबाउट पीपल हु से हम एक स्मोक करने जा रहे हैं, अच्छा ज़रा सा खाना खाएं एंड दे डोंट कम बैक एंड दे टेक लीव. हाउ डू यू से? देखें बड़ी सिंपल सी बात है. You will वी आर वेरी सीनियर प्रोफेशनल्स. हम जो भी जॉब मार्केट में आता है 2-4 महीने 5 महीने में बड़ी चीज़ें सीख जाता है. वी शुड बी ओल्ड इनफ एंड मेच्योर इनफ टू रेगुलेट आवरसेल्व्स. सिगरेट पीनी है पिए, आपने चाय पीनी है कॉफ़ी पीनी है, ऑफिस में लोगों से गप्पे लगानी है आप करें, बट जस्ट हैव इट इन योर माइंड कि यार मेरा 1 घंटे की ब्रेक है पेड इन द डे तो आई कैन स्प्रेड इट आउट. मैं मिस यूज़ ना करूँ. आई रियलाइज एट टाइम्स लोगों को काम करना पड़ता है, ओवर टाइम भी काम करना पड़ता है विदाउट एनी कॉम्पनसेशन. तो इसलिए ये है कि बस पॉइंट इज़ दैट जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल. इफ़ यू आर रिस्पॉन्सिबल कोई मसला नहीं होता. Okay, now to sum up, what do you say? How HR manages employees जो डिले करते हैं उनको आप वार्निंग्स इशू करते हैं और नोटिसेस भेजते हैं, उनके हेड्स भेजते हैं, आपके अपने सीईओ भेज रहे होते हैं इन एनी फर्म. So how do you handle them, especially when they are good people, they are good employees also. So how do you handle them? देखें नॉर्मली शो कॉज नोटिस वगैरह तो बड़ा एक्सट्रीम केस होता है डिलेज़ में. नॉर्मली इस तरह की हरकत तब की जाती है व्हेन देयर आर रिपरकशंस. गवर्नमेंट की कुछ फॉर एग्जांपल टैक्सेशन रिपोर्ट्स जानी होती हैं, सबमिट होनी होती हैं, कुछ पेमेंट्स जानी होती हैं एंड सो ऑन.
जब उनकी बात करें, एचआर ने कुछ डेटा जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करनी होती है लाइसेंसिंग के लिए, ऑपरेशनल लाइसेंसेस वगैरह ये वो। तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग्स, तो डिले कैन हैव सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज, तो उसके ऊपर तो शो कॉज नोटिस, वार्निंग्स एंड इवन टर्मिनेशंस हो जाती हैं। ऑन डेली बेसिस 3 एडवाइसेस यू हैव फॉर पीपल जो नहीं मैनेज कर पाते अपने शेड्यूल्स, अपने वर्किंग आवर्स, होम आवर्स, फ्रेंड्स एंड ऑल, वो काम पे आए हैं या वो घर पे काम कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से 3 एडवाइस क्या है? देखें, पहली बात ये है, आई वुड से कि अगर आप इन्जॉय कर रहे हैं तो इन्जॉय करें, और काम कर रहे हैं तो काम करें। अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों ही नहीं होंगे। दूसरी चीज़, ट्राई बीइंग अ लिटिल ऑर्गेनाइज्ड, चीज़ों को चाहे लिख लें। एक चीज़ जो कई लोगों को हेल्प करती है वो ये कि सुबह सुबह वो एक छोटी सी डायरी पे या अपने पैड पे लिख लेते हैं कि आज मैंने ये 3 चीज़ें करनी है या 4 चीज़ें करनी हैं, तो डू दैट, क्रॉस देम आउट। और तीसरी चीज़ ये कि यू नो व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हैं, यही कॉपी पेंसिल की बजाय आप इलेक्ट्रॉनिक टूल्स यूज़ कर सकते हैं। यू कैन मेजर योर परफॉर्मेंस ऑन अ डेली बेसिस, पर्सनल रिमाइंडर्स लगा सकते हैं। तो ये है कि मतलब दीज आर द 3 थिंग्स आई थिंक विच शुड हेल्प पीपल ट्राई टू maintain that pace and stay abreast of whatever they're trying to do. ओके, एंड एट लास्ट कोविड के हवाले से आपने कोई मैसेज देना हो तो आप दें। Yes, I would like to urge everybody कि please यार मास्क पहनो, wear your masks. सेकेंड वेव आ गई है, थिंग्स आर नॉट कैजुअल, डोंट टेक इट ईजी। मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें, और अपने आप को भी सेफ़ रखें और सबके लिए भी सेफ्टी करें। और यकीन करें कीजिए, समाजी फासला 6.0 is the way to go. ओके, थैंक यू गुरम राना साहब, अल्लाह हाफिज़। Thank you.